Welcome back to another wonderful episode of Leaders. Today we are on episode 9 and आज एक बहुत ही खास गेस्ट हैं हमारे साथ and people like these are the ones who drive change in the world. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ सी being an entrepreneur is something that everybody wants to do. आप एक entrepreneur बनना चाहते हैं, आप successful होना चाहते हैं और आप successful बन भी जाते हैं. But the beauty lies in making other people's dream come true. जब आप किसी और का हाथ पकड़ के उसे थामते हैं और उसे ऊपर खींचते हैं, दैट इज व्हाट शोज कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर, मतलब कि दैट इज द ट्रू साइन ऑफ अ लीडर. लीडर का मतलब ये नहीं है कि देयर इज समबडी कमिंग एंड गिविंग यू अ वोट और यू आर इलेक्टेड इन सम कमिटी और यू आर अ टॉप बॉस. नो, लीडर्स आर दोस हु हेल्प अदर्स राइज. And with us is one of the sponsors of our show, Amandeep Singh from Samay Enterprises, one of the leading contracting firms when it comes to retail contracting and commercial spaces, malls, etc. Thank you so much, Aman, हमारे बीच में आने के लिए और सबसे पहले ये कदम लेने के लिए कि आपको लगा कि आप एक ऐसे शो से जुड़ना चाहते हैं और आप अपने खुद के गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं, आप बुलाना चाहते हैं लोगों को कि नहीं आपका इस शो में आना ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे आपने क्या हासिल किया और आप दूसरों को राह देते हैं. सो दैट्स अ वंडरफुल थॉट बिहाइंड दिस. तो हाउ डू यू फील फर्स्ट to be a sponsor of this show? We'll come to your work next. So thank you so much, Sudarshan, inviting me. This time you are inviting me. So being a leader, it's very important कि मैं तो लीडर हूँ तो मुझे मालूम है कि लीडर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट नेशन वांट टू नो कि और भी कितने लीडर्स हैं हमारी ट्रेड के अंदर, और भी कितने आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बट लोगों को मालूम नहीं है कि किस टाइप उस बिल्डिंग के पीछे कौन कौन से आर्किटेक्ट्स का किस किस टीम का हाथ है. बहुत लोगों का हाथ होता है. एब्सोल्युटली. सो दैट्स द रीजन बिहाइंड के ऐसा एक शो लेके आना है कि मेरी जो इंडस्ट्री है तो उसके जो हिडन सीक्रेट्स है, हिडन जेम्स है, तो उनको हम आगे लेके आए. दैट्स सो अमेजिंग. एंड मतलब ये ख्याल, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कैसे आया आपके अंदर ये ख्याल, लाइक व्हाट वेंट बिहाइंड? आपने पहले देखे थे सीजंस एंड समथिंग लाइक दैट? एब्सोल्युटली, सीजन में देखता था. बट एक हमारी ट्रेड एक ऐसी है कि जितने भी ये आर्किटेक्ट्स हैं ये तो आगे नहीं आते थे. या तो कोई आर्किटेक्चर का फोरम होता था तो वहीं पर ही सारे आर्किटेक्ट्स आपको मिलते थे और वहां पर भी वो चूजी आते थे जो फोरम चाहता था उनको बुलाने के लिए. बट एक ये प्लेटफॉर्म ने इसलिए हमने क्रिएट किया सो दैट कि हम उन लोगों को बुलाए जिनको शायद कोई नहीं जानता. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. दैट्स अ वंडरफुल स्टेप. इससे काफी लोगों को आपने जो बुलाया था, पीछे भी हमारे कुछ गेस्ट आए थे जिनको आपने बुलाया था, चौक स्टूडियो से कोई आए थे, एंड देन यू गॉट अदर पीपल आल्सो. आई थिंक यू वर द वन एंड यू एंड पराग टुगेदर इनवाइटेड आर्टिकल्चर आल्सो. सो देयर आर सो मेनी टॉपिक्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. दुनिया को पता लग रहा है कि एक्चुअली चल क्या रहा है. इट्स नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन पारितोष पाठक के नेटवर्किंग वाज huge, इस तरह से उन्होंने बताया. नेटवर्किंग इज एवरीथिंग ना. नेटवर्किंग इज एवरीवेयर, वेयरएवर यू गो नेटवर्किंग इज एवरीवेयर. और अभी आपने पीछे उनको गौरव भगत को भी आपने इनवाइट किया था, आपने और पराग ने मिलके. सो दैट वाज रियली अमेजिंग एंड अ वंडरफुल एपिसोड एंड दैट्स हाउ पीपल गेट टू नो ईच अदर. लोगों को पता लगता है कि ऐसे भी प्रोफेशंस हैं. आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो कहीं नहीं हो सकता. 150 करोड़ की मार्केट है, 150 करोड़ की. सो मैं अगर आज के टाइम पे देखूं बीइंग अ सरदार तो एवरीबॉडी इज कीन टू गो कनाडा. कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. सो मैं उनसे बच्चों से एक ही बात बोलता हूँ, जहां पर आप लोग बैठे हो 150 करोड़ की बात है, अगर तुम यहाँ पर क्रैक नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है वहां पे जाके क्रैक करोगे? पहले एटलीस्ट अपनी सिटी में तो, अपनी कंट्री में तो जाके वहां पे क्रैक करो, तब वहां पर जाने का मतलब बनता है. मेरा ये कहना है. आपने बिल्कुल सही बात बोली. लाइक योर बॉडी इज योर ओन टेम्पल. आप जो खाते हैं आप उसी पे पलते हैं. जैसे मैं हमेशा मानता हूं कि डाइटिंग और नो डाइटिंग के फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर गट इज योर एवरीथिंग. आपने जो बचपन से खाया है वही आपके लिए सबसे सही है, राइट? उसी तरीके से वी नो एवरीथिंग अबाउट अ कंट्री, द लेंथ एंड ब्रेड्थ, वी नो द पीपल, वी नो द लैंग्वेज, वी नो द कल्चर. अगर यहाँ सक्सेसफुल नहीं है तो कहाँ पे होंगे? और दूसरा, जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं ना, जैसे बीइंग अ सरदार, हमारी गुरुओं की धरती है. हाँ, तो इसको छोड़ के हम कैसे आ सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट इज अ ब्लेस्ड लैंड. मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, लाइक दिल्ली को कहते थे कि दिल्ली वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ, इन द डेज ऑफ द महाभारत. दिस इज वेयर वॉर हैपेंड. तो मैं यही सोचता हूँ कि ये वही है, व्हेन वी टेक अ स्टेप कि दिस इज द लैंड वेयर सच ग्रेट हीरोज मार्च्ड एंड लिव्ड. हाउ पायस इज इट, हाउ ब्लेस्ड इट इज, एंड वी हैव दैट फॉर्च्यून, और वी आर फॉर्चुनेट कि मतलब हम एक ऐसी जगह पे हैं. तो उसको रियलाइज करें तो बहुत आगे चल सकते हैं. डेफिनेटली. तो लेट्स कम टू योर बिजनेस. डेफिनेटली योर फिलॉसफीज आर डेफिनेटली इन ऑर्डर. योर थिंकिंग एंड योर एटीट्यूड इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. हैट्स ऑफ टू दैट. How did Samay Enterprises start and why Samay Enterprises? It's a very different name.
सो समय बेसिकली मैं इंटीरियर फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो समय इज एवरीथिंग बिकॉज बीइंग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से अगर हम बिलोंग करते हैं, एवरी साइट एवरी डे इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. सो दैट्स थॉट मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा समय ही नाम रखना चाहिए. टर्न अराउंड टाइम फोक्स. सो ये था. हाँ, जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही क्योंकि आज की सक्सेस सबको मालूम है, बट जो पेन पीरियड थे हमारे, जो 17 to 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, आई थिंक क्रेडिट गोज टू माई एंटायर टीम बिकॉज ऑफ टीम. एंटायर इंडिया हम लोग आज कवर कर पा रहे हैं. इट्स नॉट इजी कि यहाँ पर एक दिल्ली जैसे सिटी में रह के मैं पूरा इंडिया कवर करूँ. द क्रेडिट गोज टू एंटायर माई टीम, माई फैमिली. जैसे सब कहते हैं एवरी सक्सेस पर्सन देयर इज अ वुमन बिहाइंड. आई थिंक लाइन लगी पड़ी है मेरे पास वुमेन्स की. माई वाइफ, माई मदर, माई सिस्टर, माई डॉटर. So everybody is behind me. Yeah, absolutely. This is so amazing. Yeah, so you realize अकेले हासिल नहीं होता. There is always somebody. And I have never believed in this statement myself that you're a self-made man or a self-made human. Situations are there, conditions are there. चीजें होती हैं जो आपको propel करती हैं. अगर वो नहीं होती तो आप वो नहीं बनते. And if there's a self-made person, then my teacher, like he said once, अगर कोई कहता है self-made है, then just push him into the desert and ask him not to look back. Let's see what happens then. Absolutely. So being a Sardar, जैसे I hardcore follow Guru Gobind Singh जी. So he is a freedom fighter. So उनके साथ सीखने को काफी मिलता है. वो कहते हैं ना, चिड़िया नाल बाज रहा, तो तभी गोविंद सिंह नाम धरा. तो हमारी जो ट्रेड के अंदर ना, हर क्षण हर पल हमारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, आते रहेंगे. तो उनके साथ कैसे compete करना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को अपडेट रखना, कि आज के टाइम पे अपने आप को अपडेटेड रहना एवरी टाइम. एंड कंपटीशन भी अच्छा है, मतलब and it is very good to have that kind of a competition because only then you'll be able to achieve certain standards, you know. Without competition you never learn ना. अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं कर सकते कोई कंपटीशन नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं क्रेडिट टीम को अपना दे रहा हूँ. मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो उनसे, तो वो मेरे ग्रोथ पार्टनर्स हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई क्लाइंट, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जो डे 1 जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइक कूलर बाथ फिटिंग्स, जैकवार बाथ फिटिंग्स. सो आज भी लावा का शोरूम आपने पहले बनाया था. You started with that one. Yes, I start my phone journey from lava to Apple. And yeah, so yeah, how's that? This I want to talk viewers, you know, India में the first Apple store, official Apple store is being opened in Mumbai, and you know, we are talking about quality and standards. Who do you think Apple would trust? Samay Enterprises to execute their project. That's the grace of God and blessing of my parents. Because of that, this will happen. I will go beyond the grace of God and blessing of parents. वो तो natural है. It is always there. But your own commitment and hard work and the ideals by which you function, आप जो अपने आप को अपने जो अपनी कंपनी में प्रोसेसेस भी डाले होंगे, and the way you work, your attitude towards work, that is what matters most. Absolutely, absolutely. Work speaks themselves. तो काम देखा मेरा, उन्होंने प्रोफाइल देख के शॉर्टलिस्ट किया, और आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक दिन में हमने ये ऑर्डर क्लोज किया था. एक दिन में बस कॉल आई थी कि अमन मुंबई में आना है, ये साइट तूने देखनी है, साइट तूने टेक ओवर करनी है. तो इन वन डे, एंड टोटली गेम चेंजर फॉर मी. Absolutely, it is such a big thing. Apple is the biggest brand when it comes to mobiles, you know. मतलब कि उनका फोन, अभी खबर आती है कि फोन आने वाला है और बाहर हजारों की लाइन लग जाती है already. It's a privilege for me to being a part of that prestigious project. So next time you will be queuing in front of the Apple store in Mumbai, remember who, you know, brought it to reality, whose, you know, I don't know whose vision it was, who was the interior or the architect behind it, the designers, but the one who executed is sitting right in front of your eyes today on this show. Thank you so much. Thank you so much. So how does it feel to be associated with that? मतलब ये सब लोग ही पूछेंगे, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूछते हैं ना कि कैसा लग रहा है? It's a next level feeling. मतलब कुछ feelings ऐसी होती है जिसको आप अपने words के साथ, अपने emotions के साथ ना explain नहीं कर सकते. So that kind of feeling for me. It's a really privilege for us also. See, we've talked about, you know, quality and everything, and that is the reason why you're here. But what do you think is the one thing that is the backbone for Samay Enterprises, because of which you are growing by leaps and bounds or able to deliver? So if I'm telling about the backbone, तो always all the people are telling to me कि आप हमेशा से पॉजिटिव कैसे रहते हो. So I think ये मुझे मेरे फादर से मुझे मिला है. तो कुछ भी अगर होता है, क्योंकि हमारी साइट पे, हमारे काम पे डेली बम गिरते हैं वहाँ पर. ऐसा नहीं है कि साइट आज लोगों को कंप्लीट की हुई दिख रही है. जब वर्किंग चल रही थी उस टाइम पे डेली बम गिरते थे. सो ऑलवेज कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है. सो मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं, आज भी मुझे सिखाते हैं. अभी कुछ प्रॉब्लम है, इशू होते हैं, ऑलवेज कोई बात नहीं, कुछ सब सेटल हो जाएगा. So always motivated me. My father is behind me. So नहीं, how does it happen? क्योंकि आपने बड़ी आसानी से कह दिया, और ये बहुत ही ज्यादा गहरी बात है. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ. जो उन्होंने बोला ना सब हो जाएगा, वहां पे क्या होता है, फेथ आता है इन प्ले.
And viewers, I always believed in one thing: faith is neither more or less or big, strong or weak. It is either there or not there. So team, That's the only thing. So टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मैं स्टीव जॉब को फॉलो करता हूँ. एप्पल का तो स्टोर मुझे अब मिला है, तो स्टीव जॉब को मैं तब से फॉलो करता हूँ. तो स्टीव जॉब का एक कोट है, इट डजंट मेक सेंस टू हायर अ स्मार्ट पीपल देन टेल व्हाट टू डू. So we hire a smart people then so that they can tell us what to do. Absolutely. So one of the things why Samay Enterprises is so successful is because of the kind of people you hire. Absolutely. It goes to my people, my team. Yeah, you're the sum total of the 5 people you move around with most. कहते हैं ऐसे basically. Right now we have more than 100 plus team totally in-house. So no dependency on other vendors. That's simply amazing. So, is your office located only in Delhi or Gurgaon? Right now, my office is located in Gurgaon, but soon we are coming in Bangalore and Mumbai itself. Very soon. How did you fight through the COVID times? That is something I would like to know because बहुत कुछ हुआ है उस टाइम पे. आई थिंक मेरी ट्रेड एक ऐसी है कोविड की जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी, क्योंकि लेबर ओरिएंटेड वर्क है तो हर टाइम लेबर वहाँ पर होनी है. बट ठीक है कि मुश्किल टाइम से भी कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन एक चीज़ अच्छी ये रही कि मैंने कोविड में भी अपनी कोई टीम मैंने अपनी हटाई नहीं है. आज भी वही टीम मेरे साथ एसोसिएट है. और मजे की बात, जो टीम डे 1 से मैंने अपने साथ एसोसिएट की थी, सो 80% टीम आज भी मेरे साथ वही काम कर रही है. मैंने 12, 13, 15 साल हो गए, टीम मेरे साथ आज भी लगी हुई है. That is so amazing. मतलब फैमिली बढ़ती गई है. Absolutely. There has been no retrenchment. Never. That's so amazing. मतलब लोगों को कितना विश्वास मिलता होगा. You know the strength of fulfillment कि हमें पता है हम आ गए हैं, यहाँ से हमने कहीं जाना नहीं है, खाना पानी चल रहा है, काम करो बस लग के, मन लगा के. Absolutely. So now my target is, अभी आपसे बात भी कर रहा था कि 2026 में मुझे अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करना है. सो माई टारगेट, माई विजन इज दैट, क्योंकि बिकॉज हमारी फील्ड इज वेरी ना, या तो बहुत प्रीमियम सेगमेंट के हैं या बहुत इस सेगमेंट के, तो बीच का जो सेगमेंट था हमने वो कवर किया है. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हमने काफी हद तक अचीव कर लिया है. That is so amazing. So the IPO would be coming out in 2026. Watch out for that. I am telling you, if you invest in that, you will be reaping profits in millions. Because I have seen his attitude over the last few episodes, the way he has been involved, bringing in guests, and the kind of dreams he shares with everyone. Amandeep Singh, you are an example for everybody to follow. I wish that your competition is seeing that and they take that inspiration from you. Any particular thing that you would like to say to youngsters who want to get into this field? सो यंगस्टर से मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी डीमोटिवेट मत हो वहाँ पर, कभी भी काम के अंदर अपने, तो जो भी सिचुएशन आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको फेस करें और आगे बढ़े. क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से मैं आगे निकला हूँ. मैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है. अगर आप घर से आप अपने ऑफिस जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आपको ग्रीन सिग्नल, रेड लाइट्स आएंगी, हडल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उसको फेस करके पहुंचना है वहाँ पर हर हाल में, वो अचीव करना है बाय हुक बाय क्रुक. एंड वो आप तब कर पाएंगे जब आपके अंदर वही विश्वास होगा जो अमनदीप सिंह में है. क्वेश्चन ऑफ फेथ. इफ यू आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, इट मींस योर फूड एंड शेल्टर इज लुक्ड आफ्टर. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. बाकी सब आपने खुद करना है. बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो. अमनदीप सिंह की तरह बढ़ो, समय एंटरप्राइजेस की तरह आगे बढ़ो. बिल्ड योर कंपनी, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, पुट टुगेदर योर टीम एंड जस्ट हेड ऑन. एंड आई विल टेल यू, your goal will come marching towards you. That was Amandeep Singh with us on this episode 9, the first guest. Thank you so much for being a sponsor. Like I said, one of the leading retail contracting firms in the country when it comes to your commercial spaces. And then thanks a lot. Benson Trophies, the #1 trophy manufacturer in Bharat, and Cloud Access, Bharat ka #1 cloud platform. Thank you Tajiri for this wonderful suit. We'll be back with another guest in the second part soon. See you. That is the first. Yeah. That is so amazing. It's just possible. It's endless. It's like solutions to a problem, functionality, aesthetics. How do I bring all of it together? Most importantly, how do I bring the client's vision to life? Which will make each project as unique as they can be. I'll tell you a very short story, and this is a real one. और ये story भी नहीं, this is what history is all about. आप लोगों ने देखा होगा, mankind, how do we know so much about civilizations? ये पहले भी हमने बात करी हुई है. There's so many structures that are made. There's so many paintings. There's architecture everywhere. There are many, drawings from the past that you see and you figure out. आप बताते हैं कि ये शायद ये society इस तरीके की थी. But there's one thing. Probably, it is written in some good books, जिन्होंने research किया, writers ने लिखा, which I read. Prehistoric man, when we were in that age, they used to all go to hunt. But there was a very specific sect that never hunted. They would see what is happening and they would draw, जिनको हम कहते हैं cave paintings, right?
And they were a very special lot, and it is said that they were protected because they are able to see and translate and draw. Now when I say draw का मतलब ये नहीं कि pencil पकड़ा और you start drawing on paper. You draw water from a well. It doesn't remain of the well, it becomes yours. You draw money from a bank, it is extraction. They could draw something which others could not. And this bunch of people, you know, they were the poets, the creative people, the writers, the thinkers, the philosophers, a very, very, very special breed of people. Or it is because of the creative genius of people that the whole world's business survives. क्योंकि अगर वहां पे आइडिया नहीं होता तो आज वहां पे एरोप्लेन नहीं बनता और आज फाइटर जेट्स भी नहीं बनते. You know, and creative people now, they can't hold their horses. It runs in multiple directions. मतलब इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि फिजिक्स में जो अच्छा है तो केमिस्ट्री में भी हो जाएगा, तो लेकिन क्रिएटिव पीपल के साथ है, दे आर ब्रिलियंट एट राइटिंग, ड्राइंग, क्रिएटिंग, म्यूजिक. आई मीन यू पुट देम इनटू एनीवन. And we have one such wonderful fine guest with us in the second part of episode 9. Welcome Shalini Ganguli. Thank you so much for being over here. Thank you for having me. And you come from, no, it's such a pleasure because you come from such, you know, it's a myriad of things that you've done, you know. Yes. Wahan se now you have evolved into an interior designer of repute. Yes. You know, a content writer, Yes. writing, you know, ads and stories and strategies and, you know, all those Something things. you will know very well about. Yeah, being a brand building consultant, I know that it has its own pains and pleasures, Right, that too. right. But then, from writing on paper to writing poetry in spaces, I would put it that way. Okay, nice. How was it? And why? You know something, it wasn't even planned, it was destined. Because the time that I started my journey, what I thought was I was in between two jobs. Oh. I actually thought that I was between two advertising jobs. I was just sick of the late nights and you know how it is, you know better than I do. And I one day just stopped. I put an end to it and I said, I'm not going to do it for some time. And I came home and I started focusing on my house. That, you know, there's this area which isn't looking nice, there's that area that isn't looking nice. I'm going to start by being my own client and problem solve my own areas. But I didn't know I was doing that. And I was like, you know what? I may just do it in the rest of the house, so let me document this process. And that was around when Instagram was newish. I kind of... So we're talking close to about 8-9 years? 2013, yeah, 2013, a decade 14, like yes, exactly a decade ago. I thought, let me document this for my own self, not realizing that I was actually capitalizing on something that was going to become a booming platform for creative people. Wow. So I started documenting my own journey, and my Instagram started growing from 0. It was a new account to 6,000 in 2 months to some 22,000 in a year. Wow. And it's at 35,000 now. It's kind of seen a slowdown, but during the time when I started, I thought what I was doing for myself kind of just grew like... You know, it had the vibes, you know, people liked it and they were like in resonance with what you were doing. I suppose it was different to sharing what I'm eating. Huh. And you know, I was like literally like, okay, this is what I'm doing with my house, this is the process I'm using, this is the fabric I'm using, I was showcasing it like that. Then it happened that Inside Out Australia magazine, they got in touch with me and they were like, can we feature your home? And I said, yes, go for it. Like, I was still thinking I'm going back to advertising at this point. Amazing. Yes. That happened. Then a friend of mine who's an architect, he called me up from Calcutta and he's like, hey, my clients, I do all their commercial properties. I've suggested they look at your work for their residential. And that was how I took the plunge into interiors, completely inadvertently. Wow, that is such a fascinating story. मतलब आप देखिए कि मतलब just एक you know कि आपके अंदर वो एक हुआ होगा कि शायद मैं किसी गलत फील्ड में हूँ जैसे आपने बोला, and then मतलब कई बार आपका मन नहीं मानता ना कि then you get drawn towards something else. I used to think advertising was my calling till I started interiors. Yeah, and I now, also thought. Yes. No, honestly. Until what we're doing now. Honestly, yes. Now that I'm doing it, I eat, breathe, sleep interiors. There's nothing else that I think of on this planet apart from my child and work. That's it. And I love bringing people's stories to life. That's what I like. So I think I've also found my space like she has. Wow, that's amazing. Yeah, that means you're addicted. You're as addicted as No, I am. yeah. See, this is because, see, you know, as a creative person, matlab,
the process of construction and destruction जो है ना, yeah. वो एक creative mind के अंदर चलता रहता है, because 100%. क्योंकि कहते हैं कि God said be and everything became. Right. So the big bang happened. So there was a lot of destruction. Right. ठीक है, उसके बाद से दोबारा बना. तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली यूनिवर्स में चल रहा है. एंड एक क्रिएटिव प्रोसेस भी एग्जैक्टली ये होता है कि बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं और उसके बाद बहुत अच्छी होती हैं. बिकॉज आई हैव सीन इट. सो बीइंग अ पेंटर माई सेल्फ, मैं आई एम अ प्रोफेशनल पेंटर टू, मैं करता रहता हूँ. तो हम लोग जब ड्राइंग करते थे तो ड्राइंग्स वुड रीच अ सर्टेन लेवल, वो बड़े आगे फिर आगे जाके बिगड़ता था. तो फिर माई टीचर वुड से दिस ऑलवेज. सो कहते थे कि दिस इज द टाइम जब सबसे ज्यादा अपने अंदर संयम रखना है, पेशेंस रखना है और करते रहना है. क्योंकि अगर इस स्टेज से निकल गए तब तुम एक नए मुकाम पे पहुंचोगे. बिकॉज वो बिगड़ना चालू होगा. इट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ. आप कुछ भी कर लो and then it will reach the next stage. It's like the supernova of your own creativity. Absolutely, it happens. Right. ठीक है. So I think that is something जो आपने भी फेस किया होगा इस all field the के time. अंदर. Each project, literally each project for me, it's like just the wait for the vision to come to life. Every project you reach a stage where you're like, this is not happening, but you just persevere. You're like, no, it is going to happen. You're going to bring it together. The day it comes together, magic. What does space mean to you? मतलब, Space. I'm means, now asking, yes. not like a Yes. like an entrepreneur or anything, from one creative Right. person to another, to the tens of thousands of creative people who are seeing this right now. Right. Very interesting question. Because one of the reasons why I find interiors to be my highest calling is because I find space to be possibilities. Wow, that is the first that I have heard. Yes. Brilliant. So there's one particular thing I want to ask. How do you interpret space? What does space mean to you? Okay, that's a great question actually. Had you asked me the same question while I was still in advertising, I would have probably written a book which was as fat as Steve Jobs' book. But in space, it's a whole different ball game. To me, it's just possibilities. That is the first. Yeah. That is so amazing. It's just possibilities, endless. It's like solutions to a problem, functionality, aesthetics. How do I bring all of it together? Most importantly, how do I bring the client's vision to life? Which will make each project as unique as they can be. Because they're not me imposing my point of view. Yeah. It's me bringing their vision. See, yeah, because see, आप एक जगह को डिजाइन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन उधर रहना उसने है जिसने वो डिजाइन करवाया आपसे. Correct. I mean, there are two ways of looking at it, right? One is every bedroom has a bed, 2 side tables, a TV unit, and a chair. I have a brilliant thing to say over here. Go If you don't mind. Go for it. So I used to teach design thinking and art and graphics in Sushan School of Art and Architecture at the time. And I used to ask this question: design a house for a dog. Right. And that was my first exercise. So Right. every dog will have a kitchen to cook food, a bedroom where the dog could sleep, a garden where it could run and play, and all that. Then I said, what different are we doing for a human being? Exactly that. It's literally that you've nailed it. You Yeah. literally nailed the thought process Yeah. that I have. So yes, every house has the same basic elements. Absolutely. What makes it unique is taking the time to understand very, very deep and basic wants of the client. What are their visions? What is their aspiration for themselves as a family, as a hosting group of people? What is their aspiration, and bringing that to life? But that is also sometimes very difficult because see, you and I both know, we both work with whom? Our clients, not with our projects. सबसे पहले. And they come in with so much of confusion many times. Yes. How difficult or easy it is, or what do you say to put their worries at rest? क्योंकि they keep evolving in their own minds. Yes. They keep jumping branches all the time. Yes. And it is natural. Yes. And they have all the right to do so. क्योंकि Yes. कितनी सारी चीजें करनी है. True. If you remember from your advertising days also, there were some clients we were very lax with, and they would take the most advantage, and then there were some clients who we were very, very confident about managing them. Over the course of my time, I feel like I am streamlining my processes in a way that each step that we move on to is slightly more foolproof than before we go to the next step.
So we don't have to keep coming back to the. So does it mean मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि आप अपने clients को शिक्षित भी करते हो इस 100%. field के बारे में? Funny thing Because that you मेरा say that. मानना Yes. ये है, you know, Yes. education works better 100%. than actually selling a design. You teach design, you'll get more people, but if you sell a design, you'll hardly find any. In fact, very interestingly, one of my former clients, who's now a very, very dear friend of mine, and she actually, when the project was over, she was like, "Can I just join you?" Wow. Yes, and I said, "Please, just come," because she was so in love with the process, so deeply involved. It was really a collaborative effort, really a collaborative effort. And you know what? The testimonial that they gave me was so beautifully, where they didn't take any credit away, where they were so gracious in what they were saying, but I know how much hard work she put in with me as well. Yeah. You know, that kind of made it even more amazing, that by the end of the project she was like, "You know what, I would love to do this with you." Wonderful. Yeah. So amazing. See, many designers would be learning from this episode. Right. What would you like to say उन लोगों को जो इंटीरियर स्पेसेस डिजाइन करवाना चाहते हैं क्लाइंट्स, आप उनको क्या एडवाइस देंगे, being one of the leaders of this industry? This is the client I'm talking to, potential clients I'm talking to. हाँ. If you are hiring someone, put your faith in them, हाँ. or don't hire them. हाँ. Because if you are going to hire someone and you don't put your faith in them, you will end up getting something that you cannot be happy with. Nobody will be happy with the process. Yeah. If you are putting yourself out there, firstly, make sure that you have a good rapport with the person you're going to Yeah. hire. हाँ, so this is the most important thing. You know, आप जब किसी को जान जाते हैं, आप पहले उसको पहचानिए. जानना जरूरी नहीं है. जान पहचान बोलते हैं हमेशा, मैं जानता हूं नहीं बोलते कभी भी. You know, that's the kind of thing. तो पहचानने का मतलब यह है कि आप समझते हैं उनको, और जब आपके डिजाइनर्स आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे, तो वो ना, क्योंकि देखिए ऐसा है कि डिजाइन और आप जो है ना, इट्स लाइक अ फैमिली. यू कैनॉट लिव सेपरेटली. इट कांट वर्क इन अ डाइवोर्स प्रोसीडिंग. आई वुड पुट इट दैट वे. इट हैज टू वर्क टुगेदर. इट इज वन फंक्शन, एवरीबडी कमिंग टुगेदर. दैट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना बहुत जरूरी है. उसके बाद प्रोजेक्ट अपने आप, यू नो, इट विल डेफिनेटली हैपन एट इट्स ओन पेस, और वो कंप्लीट भी होगा. Yeah, it flows. It actually flows wonderfully when you put trust in the person that you're working with. What is the one thing that you would like to leave our viewers with as a principle that you follow, which has made you what you are today, a designer of repute? Okay. The one thing that I strongly follow is, you are as good as your last project. If you cannot deliver as good in the next one, you were still as good as your last one. Brilliant. That's so amazing. मतलब देखिए, be the best version of yourself every Yes. day. आप Absolutely. क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. It's how you do it that Yeah. makes a difference Absolutely. to everything that you do. मतलब लोग देखिए, when somebody will walk into my house, they will not meet Shalini over there, but they will find the essence of Shalini over there. मैं बोलूँगा कि this has been done by that person. So this is what it is. आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, आपका काम हर जगह पहुंचता है, और वहीं से आपका नाम होता है. बचपन से सुनते आ रहे हैं हम ये कहानी, हमारे पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से समझाया था. And Shalini here is a living testimony Thank of you. all that we have spoken today. A creative genius par excellence. Thank you so much. Thank you. And being from the same field also, there are many Yes, vibes, and yes, I'm there glad was a that you lot were to here. discuss, yeah. Yeah, and I'm sure the viewers would also have enjoyed. Thank you so much to our sponsors, Samay Enterprises, the leading retail contracting, you know, company for your commercial spaces, showrooms, and malls. Then Benson Trophies, Bharat ki #1 trophy manufacturing company, and Cloud Access, Bharat's #1 cloud platform. And thank you Tajiri for this wonderful suit. I am Sudarshan Ramakrishna Chitlur. This is the 9th episode of Leaders Today. We'll be back with more exciting guests in our 10th one. See you next week. Bye.